What we have to do in this question? We have to prove that y equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is increasing function, okay, of theta in 0 to pi by 2. Okay, so we have to prove that this is increasing function in the interval 0 to pi by 2. What we have to do? First step that we have to do here, we have to take the derivative. Yes. So can we take the derivative with respect to what? With respect to x or with respect to theta? With respect to theta. With respect to theta. So can we write down here dy by d theta will be equal to, so if you look at this part, can we apply u by v here? So if you apply the u by v, then can we write down this is the 4 times of what is derivative of the sin theta? It will be the cos theta in the bracket. So derivative of u divided by v, so into v. So v is what? 2 plus cos theta, okay, minus. And if I write down the formula here, first I'll write down the formula, then we'll apply the concept. That's u dash into v minus v dash into u by v square we have to apply here. And for this, the derivative of theta with respect to theta is 1. I will write down this equal to 1. Now if I apply the formula for this part 4 sin theta upon 2 plus cos theta, तो पहले ये कितना हो जाएगा? u dash means ऊपर वाले के डेरिवेटिव, दैट इज a 4 cos theta. 4 will be as it is, sin theta के डेरिवेटिव is cos theta into what is derivative into v? V is what? 2 plus cos theta minus then derivative of v. Okay, so can we say that derivative of 2 is 0 and derivative of cos theta is minus sin theta into u. What is u? U is 4 sin theta. Okay, divided by v square. What is v square here? That is 2 plus cos theta whole square minus 1. Okay, so can we write on the, if I write on like this, so we'll get here 8 cos theta. If you multiply the 4 cos theta with the 2, then 4 cos theta into cos theta plus 4 cos square theta. Okay, then minus into minus plus sin theta into 4 sin theta. It is a 4 sin square theta whole divided by 2 plus cos theta whole square. Okay, minus 1. Now, what is 4 cos square theta plus 4 sin square theta? If I take 4 common, we'll get what? 1. So can we write on 8 cos theta plus, if I take 4 common, we can write on this is the cos square theta plus sin square theta whole divided by 2 plus cos theta whole square minus 1. Now further, if I solve this, I can write on 8 cos theta plus 4 divided by 2 plus cos theta whole square minus 1. Now further, if I solve this, can I write on 8 cos theta plus 4 minus, if I solve this, then कितना आ जाएगा बताओ? Minus, can we write on 2 plus cos theta whole square whole divided by 2 plus cos theta whole square. So 8 cos theta plus 4 minus, अब इसको आप ब्रेक करिए तो 2 plus cos theta का होल स्क्वायर को ब्रेक कीजिए, कितना आ जाएगा? क्या इन टर्म्स ऑफ a plus b होल स्क्वायर? So it will be the 4 plus 4 cos theta plus cos square theta whole divided by 2 plus cos theta whole square. So 8 cos theta plus 4 minus 4 minus 4 cos theta plus, not plus, minus cos square theta whole divided by 2 plus cos theta whole square. Can we cancel this and this? Now what is the 8 cos theta minus 4 cos theta? So can we say that we will get here the 8 cos theta minus 4 cos theta is 4 cos theta, okay, minus cos square theta whole divided by 2 plus cos theta whole square. Yes,
After that, can we take the cos theta common from here? If I take the cos theta common, okay, then I can write on this cos theta. If I take the common, so we'll get here 4 minus cos theta upon 2 plus cos theta whole square. Okay, so this is our dy by d theta. After getting dy by d theta in terms of the factor, please make all the factor equal to 0. So if I make the cos theta equal to 0, it means theta equal to what? Pi by 2. Theta equal to pi by 2. Now if I make 4 minus cos theta equal to 0, it means 4 equal to cos theta, which is not possible. Not possible. Why? Because the maximum value of cos theta is 1 and we are getting here 4. If I make 2 plus cos theta whole square equal to 0, it means that 2 plus cos theta equal to 0. That means cos theta equal to minus 2, which is also not possible. Why? Minimum value of the cos theta is minus 1. That's why this is not possible. Means we have the only theta equal to pi by 2. So what I will do now, okay, I will draw a line here. I will take one as a 0, another as a pi by 2, because if you look at this question, in the question interval is mentioned in between 0 to pi by 2, we have to check it is increasing or decreasing. So I will write on here dy by d theta, that is equal to what? Basically cos theta in the bracket 4 minus cos theta, okay, whole divided by 2 plus cos theta whole square. Now take the value of the theta which lies between 0 to pi by 2, any value. So if I take the theta equal to 60 degree, तो cos 60 कितना हो जाएगा यहाँ पे? हाफ पॉजिटिव रहेगा ये. Okay, if I talk for the, if I take theta equal to 60 degree, let's theta equal to 60 degree. In that case आपका जो dy by d theta रहेगा, पहला आपका पार्ट पॉजिटिव, 4 minus half, that is also positive. Okay, 4 minus half is also positive. After that, denominator is always positive. The positive into positive is positive upon positive is positive. So we will get here positive. That implies y is increasing. Okay, increasing function. Got this? Everyone? Yes. Let's write it down. Okay, so write down now tangent and normal. So basically we have to calculate the equation of tangent and the normal. Okay, so we know the what is a tangent and normal. ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा. 9 से tangent normal का concept, 9 से पहले से concept आता है tangent और normal का. But हमें उनका equation find out करना है. The first thing that we have to talk about what is the basically tangent and normal. होता क्या? Okay. So about the tangent and normal, we can say that it is a line. It is a line. Means if it is a line, that implies, can we say that the equation of tangent or normal, okay, will be equal to, or we can say that will be in the form of equation of line. Can we say that the equation of tangent होगा, because it is a line, so we can say that equation of tangent or normal जो होगा वो किसके इक्वेशन के बराबर होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन, और उसके फॉर्म में रहेगा. यस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? मतलब यहां से हम ये बोल सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ मींस इक्वेशन ऑफ tangent or normal must be in the form of y minus y1 equal to m times of x minus x1. ये जो इक्वेशन है ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. y minus y1 equal to m times of x minus x1, where x1 and y1 are the point through which line is passing and m is the slope of the line. ठीक है, जहां यहाँ पे आप डिफाइन करोगे व्हाट इज x1 and y1. ओके, तो x1 और y1 क्या है आपका? यहाँ पे x1 और y1 वो पॉइंट है जहां से आपका लाइन पास कर रहा है. ठीक है,
और जो आपका m है, m is the basically slope of that line, and we know what is the slope, हमें पता है स्लोप क्या होता है। तो इनके बारे में पहले देख लेते हैं, पहले x1 y1 के बारे में समझते हैं, x1 और y1 क्या है, उसका स्लोप के बारे में समझते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो व्हाट इज x1 एंड y1 हियर, अ पॉइंट, उसमें भी ऐसा लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, अ गिवन पॉइंट, अ गिवन पॉइंट through which line is passing. What is m? M is slope of the line. What is basically slope? Slope क्या होता है? What is basically slope? We can define the slope is basically, it is just a number. It is a number. यदि कोई इंसान स्लोप के जगह पे cos x लिख रहा है, sin x लिख रहा है, ओके x लिख रहा है, y लिख रहा है, इनका मतलब वो स्लोप को डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। स्लोप होता है एक नंबर, मतलब आप यदि cos x लिख रहे हो तो वो स्लोप कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें पता है स्लोप का एक रेस्ट्रिक्शन है कि स्लोप विल बी अ नंबर। और आपको क्योंकि ये चीज पता है कि स्लोप का जो डेफिनेशन होता है, इट इज व्हाट, इट इज अ टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको m के बारे में पहले 11th में भी पढ़ाया गया होगा कि बेसिकली स्लोप इज डिफाइंड एज अ टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द स्लोप। यस, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हियर कि m जो है दैट इज इक्वल टू tan थीटा, ओके m जो है वो क्या है आपका tan थीटा के बराबर है, तो वो tan थीटा तो एक नंबर होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज अ नंबर, तो स्लोप जो होगा एक नंबर होगा। तो आप लोग कभी भी गलती से स्लोप को वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको इतना चीज आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं लिखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस पार्ट को कि टेंजेंट और नॉर्मल बेसिकली क्या एक लाइन है, मतलब यदि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो वी कैन यूज ऑल द प्रॉपर्टी व्हिच इज रिलेटेड विद द लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो या नॉर्मल निकालना हो, मतलब वी कैन यूज द वर्ड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा जो रहेगा किसके फॉर्म में रहेगा, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ y minus y1 equal to m times of x minus x1, where x1 and y1 will be the point through which line will pass। और यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल विल पास, एंड m जो है m इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। और m के बारे में जो एक प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि इट इज जस्ट अ व्हाट, क्या ये एक तरह का ये नंबर है। And definition of the slope, that is what basically m equal to tan theta. Now if I have to define what will be the equation of tangent and normal, so suppose we have the function, suppose this is x axis and this is y axis, and there is a curve having equation y equal to f of x, y equal to f of x. Now we have to find out here the slope of the tangent which is passing from this point। यहाँ से एक टेंजेंट पास कर रहा है, सपोज कर लो आप, ठीक है, और इस टेंजेंट का हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। वी वांट द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट व्हिच इज पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके व्हिच पॉइंट, दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज गिवन हियर। लेट्स अज्यूम दैट दिस पॉइंट इज x1 y1, okay, this point is what, x1 y1। Now if you want to find out the derivative, if you want to find out derivation of the equation of this tangent and normal, वो भी आपको सेम देगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखने वाला हूँ, ओके डायरेक्ट यहाँ पे मैं पहले m को डिफाइन करूंगा। वी नो द पॉइंट because this is a tangent, and if I want to write down the equation of tangent I need two things। I need one point जो already आपके पास है, and I need a slope। So can you say that here m will be the basically what, m क्या था आपको, m क्या था, y2 minus y1 upon x2 minus x1, 11th में आपको पढ़ाया गया था। Can we say this is basically change in the y coordinate with respect to change in the x coordinate, and we know that why we have the f of x, we can say that this is the basically d of f of x by dx,
because the tangent is passing through one point, तो आपको जो दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा, that will be the very close to this point. So इसलिए हम जो उसका चेंज बताएंगे वो बहुत कम चेंज रहेगा. इसलिए I can write on instead of the slope, instead of change in the y coordinate, I will write on dy. Okay, so can we say that m will be equal to what here? Derivative of f of x with respect to x, which is also equal to f dash of x. But this is not the slope. This is not the slope, because if you talk about f dash of x by f of sorry, derivative of f of x by x, ये तो एक variable आएगा. But we have to calculate the value of this derivative at a given point. जिस point पे आप निकालना चाहते हो slope, तो किस point पे निकालना चाहते हो? x1, y1 पे. So we have to always calculate the derivative of that function. Okay, at where this point पे हमें slope find करना है. So m will be the f dash of x, m will be the f dash of x, or m will be the dy by dx. But at what point? x1, y1. So this will be your m. Now if you have the m now, so we can write on the equation of tangent, and that will be the y minus y1 equal to m. What is m here? Either you can use the f dash of x, or you can use the dy by dx. Okay, but where dy by dx? At x1, y1, at x1, y1 in the bracket x minus x1. So this is the equation of basically the tangent. Now if I talk about what is the equation of normal here, what is the equation of normal? So for that also we need slope, and we know that normal is basically the perpendicular line. Normal is what? Basically it is perpendicular line on the tangent. So let's assume that this is our normal. This is our what? Normal. Can we say that it will be the perpendicular to the what? The tangent. And we know that there is a property of the perpendicular case. If you have the slope of the tangent as dy by dx, so what will be the slope here? What will be the slope of this normal? It will be minus 1 upon dy by dx. Minus 1 upon dy by dx. Why? With the help of this property, m1 into m2 equal to minus 1. ये सारा जो पार्ट है वो 11th का है, तो यहाँ पे हमें उसका उतना ज्यादा कुछ यूज नहीं करना है. But we can say that with the help of the property, we know that if two lines are perpendicular, then m1 into m2 equal to what? Minus 1. Okay, this is the what? The case for the perpendicular, and m1 equal to m2, this is the what? Case for the parallel lines. Okay, so I can use this formula because tangent and normal are the perpendicular to each other. Then we can use this formula, that is what? m1 into m2 equal to minus 1. तो उससे आपको यहाँ का normal का जो slope मिलेगा, that will be minus 1 by dy by dx. But you have to find out this slope where? At x1, y1, because slope is a number. So if you want to write on the equation of the normal, that will be the also y minus y1 equal to m. What is m? M in slope, that will be the minus 1 upon dy by dx, where at x1, y1, okay, in the bracket x minus x1, and this will be the equation of normal. So write it on all this. So first we'll look at this, the example 18. You find the equation of the tangent to the curve y equal to x minus 7 upon x minus 2 in the bracket x minus 3 at the point where it cuts the x-axis. Listen, if you want to solve the equation of the tangent and normal, first step that you have to follow, calculate x1, y1. That is very important, because without x1 and y1 you can't find out the even slope. Okay, step 2, calculate m. Okay, calculate m. M means slope, either slope of the tangent or slope of the what? The normal.
and then third step apply the equation. Okay, so these two steps is very important for solving the any type of the tangent and normal problem. So if you look at this, find the equation of the tangent of the curve, sorry, to the curve y equal to this at the point where it cuts the x-axis. Means ये जो कर्व है, ओके, जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट पे हमें क्या निकालो, टेंजेंट निकाल के बताओ. तो पहले मुझे पॉइंट तो दिया नहीं है, तो आई हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट. ओके, so can we say that we have the given here the y equal to x minus 7 upon x minus 2 into x minus 3. Yes, we have this part, and we have to find out the equation of tangent where at the point it cuts the x-axis. So if it cuts the x-axis, the cuts x-axis, it means the what? Y coordinate equal to 0. Yes. Y Yes. coordinate equal to 0. So if you write on here y coordinate equal to 0, तो ये वाला part 0 हो जाएगा, तो which will be equal to what? X minus 7 upon x minus 2 into x minus 3. But we know that denominator can't be 0. तो आप इनको उधर लेके चले जाओ तो we'll get 0 equal to only x minus 7. So we have x equal to 7. So can we say that we got the point? जो point आया वो point आपका क्या है बताइए? Point क्या है आपका? 7,0. What is the point? 7, 0. This is your point. Now after getting the point, means this is your x1. यहाँ पे निकालना है, this is your y1. What we have to find out? We have the y, that is x minus 7 upon x minus 2 into x minus 3. We have to find out the slope of the tangent, and we know that slope of the tangent is dy by dx. Now we have to calculate dy by dx. So calculate dy by dx. Again we have to apply the UV rule, that is u dash v minus v dash u upon v square. Yes, upon v square. Now if you apply this, we can write on u dash means what? इसकी डेरिवेटिव कितनी हो जाएगी? 1 in the bracket. इसकी डेरिवेटिव कितनी हो जाएगी? x minus 2 into x minus 3 minus what is the derivative of the denominator? इसको यदि मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? x square minus 5x plus 6. x square का डेरिवेटिव 2x minus 5x का डेरिवेटिव 5 और 6 का डेरिवेटिव 0 into x minus 7 whole divided by x minus 2 whole square in the bracket x minus 3 whole square, or you can say that the complete whole square. यदि आपको जैसे लिखना है वैसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, instead of writing this now I will write on the complete whole square. X minus 2 into x minus 3, this complete whole square. So what is dy by dx? But we have to calculate dy by dx when x is 7 and y equal to 0. If you put the 7 here, we'll get 7 minus 2 into 7 minus 3 minus 2 into 7 minus 5 into 7 minus 7 whole divided by 7 minus 2 into 7 minus 3, this complete whole square. Now further if you solve this, 7 minus 2 is 5, 7 minus 3 is 4, minus this part will be 0 upon the same 5 into 4. Yes, but 5 into 4 is 20, so we have to write on here 20 square. So we have the 20 upon 20 square. We can cancel this. We'll get 1 by 20. That is the basically slope. Means we got the m. M is 1 by 20. And after getting the m, apply the equation, that is y minus y1. y1 is 0 equal to m. M is what? What is the value of m? That we have 1 by 20. 1 by 20 in the bracket x minus x1. x1 is, what is x1? x1 is 7. So we will get here 20y equal to x minus 7. And if I solve this further, I can write on the x minus 20y equal to 7. And this is the equation of tangent. So please follow this method to solve tangent and normal problems.
So we have to calculate the find the slope of the normal to the curve. We don't have to find out the equation. We have to find out the what slope of the normal to the curve. But if you want to find out the slope, you need the x1 and y1. Anyhow, so we have the curve. This is the word x equal to a cos cube theta and y equal to a sin cube theta. That at theta equal to pi by 4. Listen very carefully. Okay. पहले बात तो एक चीज समझ लो, यहाँ पे ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको दो कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहेगा x1 y1, लेकिन x के लिए दिया है यहाँ पे और y के लिए। x1 क्या है? x1 इज अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो मुझे ये कर्व का, ये जो कर्व है इसका जो स्लोप चाहिए होगा तो किस पॉइंट पे चाहिए? जब थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 है, तो मैं यहाँ से x1 निकालने के लिए क्या करूंगा? a cos क्यूब थीटा की जगह पाई बाय 4 पुट कर दूंगा। तो इस पॉइंट पे जो x होगा दैट इज x1, सो नॉट इस पॉइंट, इस एंगल पे जो आपका पॉइंट होगा दैट इज योर x1। व्हाट इज योर y1? देन a cos क्यूब थीटा विल बी व्हाट? पाई बाय 4। सो व्हाट इज x1 हियर? दैट इज a, कितना आ जाएगा ये? लिसन, ये x1 और y1 से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बट मैं एक जनरलाइज मेथड आपको बता रहा हूँ कि जहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन फेल नहीं हो, मतलब इसी मेथड से आपको जाना है, तो वहां पे आप इस तरह से करोगे तो आपको दूसरा मेथड है इनका डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको जो पहले बताया था 2 स्टेप्स, उसी 2 स्टेप्स को आप फॉलो करो, हमेशा आपका आंसर राइट आएगा। व्हाट इज cos पाई बाय 4? इट इज 1/√2। 1/√2 का क्यूब कितना होता है? 1/2√2। व्हाट इज द y1? y1 will be also 1। अच्छा, एक जगह sin है, एक जगह cos है ना, here will be the sin, we have the sin here। So sin pi by 4 is also 1/√2, their cube will be 2√2। So can we say that we got the x1 comma y1 that is equal to कितना आ गया बोलो? कितना आया? a by 2√2 comma a by 2√2। इस क्वेश्चन में इसको यदि आप सॉल्व नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो भी कुछ इशू नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताया कि कभी यदि मान के चलो इसी क्वेश्चन में पूछ देता फाइंड द इक्वेशन इंस्टेड ऑफ दिस स्लोप, तब आपको x1 और y1 चाहिए ही होगा, फिर कैसे करें? इसलिए मैंने आपको ये बताया। So if you want to find out the slope of the normal, so you first have to find out dy by dx. But we know that the x is dependent on the theta, y is dependent on the theta, so we have to find out first dy by d theta upon dx by d theta. So for that we need y we have there a sin cube theta. Why we have a sin cube theta? Okay, so what is dy by d theta? a will be as it is, पहले पावर का करेंगे 3 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू पावर का होने के बाद साइन का करेंगे, इट विल बी इक्वल टू cos थीटा। सो दिस इज द dy by d theta। नाउ वी हैव द x दैट इक्वल टू a cos cube theta। व्हाट इज dx by d theta? नाउ a पहले पावर का करेंगे दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा, एंड देन cos का करेंगे इट विल बी इक्वल टू माइनस sin थीटा। नाउ व्हाट इज dy by dx? अब दोनों का वैल्यू आप रख दीजिए, 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय 3a माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। एक sin से एक sin कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, sin बाय cos बचेगा, दैट इज tan। 3a कैंसिल होगा, इट इज माइनस tan थीटा। बट आपको जो dy by dx निकालना है वो कहाँ पे निकालना है? जब थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 होता है, तो माइनस tan पाई बाय 4 हो जाएगा, एंड वी नो दैट माइनस tan पाई बाय 4 इज 1। तो मतलब आपको जो dy by dx आया है इट इज इक्वल टू बेसिकली -1। बट चाहिए मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है कुछ देर पहले बताया था आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जस्ट अ मिनट, don't know why my pen is not working, yeah fine। slope of normal which is equal to -1 by dy by dx, which is equal to -1 upon 1 -1, the answer is 1। but आपको यहाँ पे कहीं पे भी x1 y1 की जरूरत नहीं पड़ी, बट इन दिस क्वेश्चन सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इन दैट केस आपको जो मैंने x1 y1 निकाल के बताया था उसकी जरूरत पड़ जाएगी।
Then you have to find out y minus y1, that is a by 2 root 2. That will be equal to m. What is the slope of the normal? That is 1 times x minus a by 2 root 2. Now if you solve this, you will get y equal to x. Okay, y equal to x. तो ये वाला आपको पूरा मेथड सॉल्व करना पड़ेगा. जब आपको इक्वेशन पूछा जाएगा तो देन यू हैव टू कैलकुलेट x1 y1. जब आपको स्लोप पूछा जाएगा तो उस टाइम पे यदि पॉइंट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो देन वी हैव टू कैलकुलेट. ओके